कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्लोविया का रिव्यू कम मिनी हॉल। तो मैंने क्लोविया जो ब्रा लॉन्जरी स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, यहाँ से ये दो प्लेन ब्रास मंगाई है फॉर डेली वेयर। ये ना अंडरवायर है ना पुशअप है, दिस इज जस्ट प्लेन ब्रास। बिकॉज फर्स्ट मुझे इनको ऑर्डर करके आइडिया लेना था कि इनका स्टफ है कैसा, क्वालिटी कैसी है, बिकॉज आई एम इफी अबाउट दिस काइंड ऑफ वेरी चीप ब्रास। मेरे एक्सपीरियंस में गुड ब्रास नेवर कम वेरी वेरी चीप, एंड दिस इज वन प्लेस वे यू नीड टू इन्वेस्ट। यहाँ पे देर इज नथिंग, बिकॉज अ गुड ब्रा कैन ईदर चेंज योर शेप, इधर इसको पूरी तरह से ब्रेक कर सकती है या बना सकती है। सो गेटिंग ऑन विद दिस, इट केम इन अ वेरी क्यूट लिटिल बॉक्स। इसमें हे यस ऐसा लिखा हुआ है, एंड हैप्पी इज माई सुपर पावर विद लव फ्रॉम क्लोविया। सो दिस इज हाउ इट केम इन क्यूट लिटिल बॉक्स। और ये जो है इसमें है दो ब्रास। इट केम रैप्ड इन लिटिल टिश्यू, हाँ जी, जो टिश्यू में रैप्ड आया, एंड दे ऑल्सो सेंट सम 2 things, 300 rupees ऑफ और योर नेक्स्ट थिंग। और ये जो कोड है मैंने डाल दिया था अपने इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब पे भी, कि इन केस एनी ऑफ यू वांट टू ऑर्डर, यू कैन गो अहेड एंड ऑर्डर, बिकॉज अभी एक्सपायर हो चुका है। So the first thing I'm going to talk is this is going to be a super honest review, क्योंकि मेरे को भेजे नहीं गए etc. I have purchased these. So the first one here, I have to say one thing. Sorry, it looks so weird. I have to say one thing though, कि जो quality मैंने expect की थी more or less वैसी ही है, but not in a good way, and you'll see soon why. So the first one is this plain. I just wanted this for daily wear. ये है, I think each of them is for 399, because first time users के लिए 200% off, 200 rupees off था. So as per that, this one is 3 or 299. Full price इसका 3 या 499 था, right? So of course I'll have that here for you to check out. तो ये जो है, it's very plain and simple as you can see. इसका जो tag अभी भी attached है. Okay, let me just check how much this one. Why haven't? Oh my God, this is for 595. This is for 599. That is expensive. Because ये जो quality है मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ. So this is very plain, simple, और while it's not very flimsy, it's quite nice. लेकिन ये 110% 600 की नहीं है, because I have seen this kind of stuff being sold on the street markets for like 100 to 200. Yes, 200 से लेके max to max 300, and depending on your bargaining powers and all that. और मैंने कई बार अपने मुंबई ब्लॉग्स में दिखाया भी है, नॉट ओनली जस्ट मुंबई, आपको हर जगह की स्ट्रीट मार्केट्स में इस टाइप की ब्रास मिलेगी। मे बी दिस इज जस्ट अ टैड सुपीरियर टू दैट, बट इट इज लाइक नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव फॉर मी। इसको मैंने पहन के देखा था, एंड आई डेफिनेटली इंसर्ट सम शॉट फॉर यू टू सी कि इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। इफ यू आर अ बिग ब्रेस्टेड गर्ल लाइक मी विद शोल्डर बोल्डर्स, सो दीज आर नॉट द ब्रास फॉर यू. I'll just probably wear them and couple of times, and that'll be it. So this is the other one, very cute. तो इसको order करते time obviously ये prints and all like attracted me. It's very very cute, and it looked very nice and all. But आने के बाद it's a little subdued, which is nice considering if you're wearing something see through, तो ये ज़्यादा pop नहीं करेगा. But I am not so impressed with the quality of this. It's not bad again for like 200-300. I wouldn't say it's bad, but full price के लिए I would definitely not suggest you guys go for these bras. If ever I order any underwire or any good quality bras from them, तो I will definitely let you know. But मेरा experience अभी तक this is not what I'm looking for. And the quality wise, ये जो straps हैं, they're pretty okay. Not cheap, I would say, not very cheap, but they do not justify the price tag of 600 bucks. ये 600 bucks का price tag को justify नहीं करते हैं ये, okay? They're just very plain, and like it's just a nice stretchy hoosieri material जो थोड़ा ठीक है, but for the price tag it's way too expensive. If you are looking for these kind of bras, then do not go to these online. At least ये वाले में तो नहीं जाए, because this is totally going to be available in very mediocre stores में, आपके local markets में मिल जाएंगे आपको at much cheaper rates. Each of these bras is 600 bucks. So that means combined these two are 1200 bucks if you end up paying full price. और definitely ये worth नहीं है, शायद इसीलिए they have these offers, So definitely ये 600 each के worth नहीं है. Probably this is why they keep having these offers, like जहाँ buy 2 buy 1 etc. So ये जो दोनों bras हैं, they are not I'm not very happy with them. And the shape of your bra is going to alter the shape of your figure, your outfit. It is something you really need to invest in. Like these are not very supportive. They are still brand new, and I know that after a couple of washes, in fact, मुझे ये लग रहा था कि I should have worn them, washed them, and then given you a better update. Next time I'll definitely do that. So I would have, because I got this quite some time back. तो इसका क्या है कि after a couple of 2 or 3 washings
मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इफ यू फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम मैं डेफिनेटली आपको वहाँ अपडेट देती रहूंगी। जैसे ये आने के बाद भी मैंने इसका अपडेट शॉर्ट दिया था। इज द क्लोविया अनबॉक्सिंग एंड आई एम गोना लेट यू नो व्हाट आई थिंक अबाउट दीज गाइज इन जस्ट अ सेकेंड। और दिस इज माई वेरी फर्स्ट ऑर्डर विद देम एंड आई एम गोना स्पिल द टी लाइक दीज bras are, like, after wearing it, after seeing the figure, seeing the support and everything, I'm not very big fan of this. About the underwire bras, I don't know, but I don't think I'll be ordering from these online sites because I always want to try out my bras. The ones I wear are usually tried and tested, जिसको पहन के ही पता चल सकता है। और also I suggest that you do not just go and buy bras because the fit you will not know till you wear it. So, and this is one piece of undergarment where you totally have to invest. You can invest in this because जो आप जैसे पहनने वाले हो, जैसे आप आपका बॉडी वैसे दिखने वाला है। because जैसे भी आपका ब्रा का शेप होगा, this is exactly how your body is going to look, right? So it's going to totally alter your figure. So this is my little take. It's a mini haul. The reason I just wanted to is because I was very skeptical of getting these kind of things since I've seen many of them being sold in street markets and local shops etc. for less than half the price, तो इसके लिए मैं skeptical थी and मैंने देखा मेरे doubts काफी हद तक सही भी थे। So that's all from me for you today and I will see you guys very soon in my next video. So take care till then and stay beautiful. Bye. Really cheap. I haven't gotten any filters on. This is just like how they are, no filters here, and you can see that they are really cheap. I didn't want any underwire and padded shit, but this was very basic and I won't return them because I'll just use them around the house and just throw it.